हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हाई यील्डिंग फार्माकोलॉजी कोर्स। आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एज यूजुअल वी हैव अ क्वेश्चन, इट्स शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द options and the clinical correlation. So let's start it. The first question for today is bioavailability difference among oral formulation of a drug are most likely to occur if the drug is freely water soluble, incompletely absorbed, C is completely absorbed, and D a little first bypass. So let's think and answer. We have to understand what is the meaning of bioavailability to solve this question. Yes, you guys are right. It's C is incompletely absorbed. So simple words में bioavailability is what? ड्रग कितनी इफेक्टिवली ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है। अगर कोई ड्रग इनकम्प्लीटली एब्सॉर्ब होती है तो हर फॉर्मुलेशन का एब्सॉर्प्शन लेवल डिफरेंट हो सकता है, बट वी हैव टू रूल आउट वाई ए बी एंड डी आर नॉट द राइट आंसर। सो फ्रीली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स पानी में डिसॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन एब्सॉर्प्शन सिर्फ सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कम्प्लीटली एब्सॉर्ब वाइट इज़ रॉन्ग। अगर एक ड्रग हर फॉर्मुलेशन में कम्प्लीटली एब्सॉर्ब होती है तो उसका बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस ही नहीं होगा। एंड द डी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक फैक्टर, लेकिन कंप्लीट एब्सॉर्प्शन ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। एंड इट्स क्लिनिकल correlation is important for like antibiotics, antiepileptic drugs and immunosuppressant. So let's move on to the next question. That is the most important factor governing absorption of a drug through intact skin is dependent on molecular weight, site, lipid solubility and nature of the base. So yes, the correct answer is lipid solubility of the drugs. So why molecular weight is wrong? लो मोलिकुलर वेट हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन लिपिड सॉल्युबिलिटी प्राइमरी फैक्टर होता है। साइट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट बॉडी एरिया पे एब्जॉर्प्शन वेरी करता है, लेकिन लिपिड सॉल्युबिलिटी स्टिल द की। सो व्हाई सीज द लाइट? अगर कोई ड्रग स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है तो सबसे बड़ा फैक्टर उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि स्किन का आउटर मोस्ट लेयर दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम इस लिपिड रिच होता है। सिर्फ वही ड्रग अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है जो लिपोफिलिक होते हैं। एंड द डी नेचर ऑफ द बेस, ये टॉपिकल फॉर्मुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, पर एब्जॉर्प्शन का मेजर फैक्टर नहीं है। इट्स क्लिनिकल कॉरलेशन इज इन निकोटिन पैच एंड फेनिटाइल पैचेस that rely on the lipid solubility. So the next question for today is a formula based question. If you know the formula, you can use such questions. So if the total amount of drug present in the body at a given moment is 2.0 gram, this is amount of drug present, and the plasma concentration is this. So the formula for today, so yes, I think everybody know the formula. That is amount of drug present in body divided by plasma concentration, and we have the both value, but the trick in this question is the values. It's different. We have to make them in one, and it's some liters. So we have to make this in milligram. That is 2000 milligram, and we have to make this also in milligram. So 0.025 milligram per ml. So we have 80 liters. So we got this answer right. Just calculation based. And it's clinical correlation. अगर ज़्यादा VD है, इसका मतलब है ड्रग टिश्यू में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी. So the next question is question number 4. So the next question is question number 4. The following attribute of a drug tend to reduce its volume of distribution. Option is high lipid solubility, low ionization, high plasma protein binding, and high tissue binding. So yes, the answer for this question is C, high plasma binding. जब एक ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज एल्बुमिन से टाइटली बाइंड करता है तो वो ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में ही रहती है, टिश्यू में ज़्यादा नहीं जाती है, एंड इसी वजह से इसका वीडी कम होगा. एंड दिस वी प्रैक्टिकली correlate in our clinical practice with warfarin, that is very high plasma binding protein, and it has slow VD. That's it. So the next question and the last question for today is marked redistribution of a feature, that is redistribution. So we should know what is redistribution. It is simply drug पहले एक ऑर्गन जैसे ब्रेन तक फास्ट पहुँचती है और फिर बॉडी के लिपिड रिच टिश्यू जैसे फैट में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है.
So the option could be highly lipid soluble drug, poorly lipid soluble drug, depot preparation, and highly plasma protein bound. So yes, everybody know this question is highly lipid soluble drugs are markedly rebound, and its clinical correlation we found in thiophantal redistribution, जो कि एक इंडक्शन एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, एंड इसके हम इफ़ेक्ट में कुछ मिनट तक ही होता है. सो दैट्स ऑल 5 क्वेश्चन फॉर टुडे. द मोस्ट हाई यील्डिंग फार्माकोलॉजी MCQ. अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. स्टे ट्यून to this YouTube channel, that is Medico Quiz. See you in the next session. Happy learning, guys.